we have to consider a question given here, decide about the topic of that particular question, and then find out the correct answer after following definite or desired steps of calculations, etc. Now the question is, a salt of metal A was mixed with a salt of metal B in a thermal process to produce 247.24 grams of the pure product, whose formula is given as AB2O4. एक मेटल A है, दूसरा मेटल B है, और इस प्रकार से इसको हाई टेम्परेचर प्रोसेस में या रिएक्शन के द्वारा हमें 247.24 ग्राम्स प्योर AB2O4 मिलता है. ये फार्मूला दिया हुआ है. Means it is an oxide, it contains oxygen also. और उसके बाद then दिया है the elemental analysis of the spinel provided the following data. अब इसका हमने एलिमेंट्स कैलकुलेट किया तो हमें पता लगा it is 65.38 grams of the metal A and 117.86 grams of the metal B. ये भी अलग दिया हुआ है कि A इतना है और B मेटल जो है 117.86 है. और चूंकि यहाँ O4 है, मीन्स ऑक्सीजन तो है ही है. और उसके बाद हमने एक्सरे एनालिसिस भी किया. द एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा AB2O4 provides a unit cell parameter of 8.085 एंगस्ट्रॉम. यूनिट सेल है जिसकी लेंथ है 8.085 एंगस्ट्रॉम और ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट है, FCC टाइप की यूनिट है. तो अब इतना सब पढ़ने के बाद हमें बड़ी आसानी से पता लगता है this is a question which is related to our studies on solid state, and we have to find out the density of the compound, that is AB2O4, and a number of options are given there. We are having different values and we have to find out the correct value for the density according to the options provided here. Now इसको हम किस प्रकार से करेंगे, हमें एक बार फिर ध्यान देना होगा कि हमको क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है. And if you look here, we are solving for the density of AB2O4, and the mass of AB2O4 which we got is 247.24. मेटल A का वेट दिया है, मेटल B का वेट दिया है और यूनिट सेल लेंथ भी दी हुई है. अब इसके लिए हमको ये मालूम है, थोड़े से हिंट्स भी या हम रिकॉल करें तो या हम कहें कि आपको हम कुछ हिंट्स दे रहे हैं that the density is given by the expression rho is equal to m by b. डेंसिटी को रो के द्वारा बताते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम. और वॉल्यूम कितना होगा, जो कि साइड लेंथ a दी है, therefore the volume will be a raised to power 3, that is aq. Now how to solve? Calculate the volume of the unit cell and then we can calculate the density AB2O4. Now here is the calculation. If you go through it, the data are provided here, and oxygen is 64 grams as I have already explained here. And then the formula unit per unit cell, here since it is FCC, therefore 8 formula units per unit cell, Z will be equal to 8. And then we can calculate mass will be equal to 247.24 into 8 divided by Avogadro's number. And this way when we calculate, we get 3.286 into 10 to the power minus 21 grams. Now density is equal to mass upon volume, and the volume we have calculated comes out to be 5.288 into 10 to the power minus 22. तो ये values हमने substitute की and we found that the correct density is 6.215 grams per cubic centimeter. Okay, तो ये तो कैलकुलेशन से हुआ. अब अगर हम इसको फिर से विचार करें, कंसीडर करें, तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं अपने आंसर को इस तरह से कि एटॉमिक वेट ऑफ दीज एलिमेंट्स है. अगर एस्यूम A 65.38, 65 is the mass number per mole, grams per mole means it is mass number, और हमें मालूम है जिंक का मास नंबर 65 होता है, so it might be zinc. And B is 58.93, and since it is two atoms of that element B2, it is 117.86 provided here. So if you divide it 117.86 divided by 2, you get 58.93, and 58.93 is the atomic weight of cobalt or maybe nickel also.
So accordingly, if you put up the values here and substitute in this formula, you get 2247.24 grams per mole. That means our answer is confirmed and this is correct. Okay. Therefore, coming back to the question again, we can confidently say that our answer is option A, 6.215 grams per cubic centimeter. Okay, thank you. That is how we can calculate easily and find out the density of the product given here. And such questions can be very easily attempted, or similar questions we can carry out in the same manner. Okay, please do subscribe to our channel. Thank you very much.